Okay, let's play Standoff 2. ये सारी मेरी स्किन की कलेक्शंस है यहाँ पर and like one of my favorite one is this UMP. It's really good. Okay, let's start. And अरे मैं रीजन चेंज करना भूल गया यार एक्चुअली मेरे को इंडिया रीजन में खेलना था इन फॉरेनर लोग के साथ यार मजा नहीं आता लेट्स गो ओह माय गॉड पिस्टल से मार दिया था दूर ओके मैं चलो हो गया we will use desert eagle and I think I will go from here what इतने जल्दी बॉम्ब प्लांट भी कर दिया उन लोगों ने कहाँ पे गया अरे बहन oh, I think we lost it बॉम्ब फट जाएगा okay let's take UMP same we will go from left side and अरे भाई ए या बी कहाँ पे बॉम्ब प्लांट किया होगा आई गेस ए पर नाइस नाइस एक ही बचा कम ऑन नाइस नाइस वेरी नाइस जल्दी जा भाई एक और था व्हाट द फक आ रहे हैं ये लोग यहाँ पर कैंप बटा के बैठे रहते हैं
सीरियसली कैसे मैं कवर के अंदर आके मरा हूँ। नाइस ब्रो। शायद मेरे पिंग आए होंगे। कम ऑन वेरी नाइस शॉट। खेलूंगा तो ये उनकी से खेलूंगा। सही है, ये भी सही है। आई थिंक ए में बॉम्ब प्लांट करेंगे। देख इसीलिए मैं बंदे नहीं मार पाता, मेरा कितना लैग करता है और पिंग भी आ रहती है। भाई इसने मेरे को चाकू से मार दिया और इसको एक भी डैमेज नहीं पड़ा इससे। यार एक मैच तो यार वी नीड टू विन। भाई कैसे मार रहे हैं यार, हैकर है क्या बेंचो। देख आई वांट टू रिपोर्ट दिस। थोड़ा होल्ड करके खेलना चाहिए। वो स्नाइपर होगा सामने।
सही है भाई। कहाँ कहाँ से फट रही है। और एक तो यार इस गेम में फुटस्टेप का कुछ समझ नहीं आता, आगे पीछे कभी आती है कभी नहीं आती है। चूतिया रांड गेम में चल हट। अब मेरा इतना लैग भी करता है। अभी बंद हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली गेम। आई डोंट स्टेबल इंटरनेट here. उनका सिर्फ दो बंदा बचा है। एट जीरो के साथ हार गए हट। डुओ ही खेलूंगा यार मैं तो, नहीं जम रहा है। आई थिंक लोग स्ट्रीम तब देखते हैं जब हॉरिजॉन्टल स्ट्रीम होती है, लाइक जो शॉर्ट्स वाले फॉर्म में होती है स्ट्रीम, उसमें देखते हैं। ऐसे में लॉन्ग स्ट्रीम तो कोई देखता नहीं है, और एक तो ये गेम भी इतना पॉपुलर नहीं है कि कोई देखे। तो बेसिकली मैं यूट्यूब पे अकेले ही बड़बड़ा रहा हूँ। ओह यार, एग्जैक्टली। इसमें ये सब इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मैं तो अभी थर्ड ईयर में हूँ एमबीबीएस, एंड आई वांट समथिंग लाइक एक्स्ट्रा इन माय लाइफ। एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ। क्योंकि बचपन से मेरे को बोलते थे कि कुछ नहीं आता है, पढ़ाई भी नहीं आती, तो आई वांट समथिंग लाइक थोड़ी बहुत पढ़ाई के अलावा भी कुछ हो मेरी लाइफ। आई डोंट वांट टू बी बोरिंग। एग्जैक्टली, इसलिए कर रहा हूँ, कोई देख भी नहीं रहा है फिर भी कर रहा हूँ। कम ऑन डाई। ये जो शॉटगन है बहुत बेकार लगती है मेरे को, इससे अच्छा तो मैं यही प्रिफर करता हूँ। लाइक,
इतना क्यों लैग कर रहा है उसे? और इसकी तो एक गोली नहीं लगी यार। इजी। स्नाइपर तो बिल्कुल नहीं आती। वैसे भी मुझे उतना अच्छा खेलना नहीं आता, तो स्नाइपर तो और खराब होती है मेरी। बट स्टिल आई वुड ट्राई स्नाइपर। सामने वाला तो बहुत ही नोब है। एग्जैक्टली मेरा नेट चले गया। हे भगवान, इस बार चल जा अच्छे से। अरे भाई, इतना खराब एम है ना मेरा। खराब स्कोप ओपनिंग, खराब एम। क्या कमरे में दूं? He is very noob यार। noob 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 noob। ओह, कहेंगे तुमसे प्यार करके नहीं। अरे ओके, लेट्स गो। डुअल ही खेलेंगे जब तक अच्छा बंदा नहीं आता। एक्चुअली कभी कभी तो बहुत क्लोज फाइट हो जाती है, एक एक या आठ आठ, सात सात का पॉइंट डिफरेंस रहता है, एंड बहुत बार तो हमें हार जाता हूँ। कहना है चूज द रीजन। एक क्रेट खोलते हैं तब तक। प्लीज पिस्टल मत दो भाई, तो कुछ और दे दो यार। ये तो है मेरे पास, यही क्यों दे दी? आई वुड लाइक टू क्राफ्ट इट, एंड ये कुछ कर सकते हैं। ब्रिज इज ऑल्सो गुड मैप। लाइक मेरे को याद है थोड़ा बहुत। सबसे बेकार मैप तो यार वो लैब है भाई, कुछ नहीं समझता है उसको।
अरे ये गायब हो गई। सीरियसली गाइस मेरा नेट बिल्कुल नहीं चल रहा है। He's in right. Oh yeah, come on. अच्छा बंदा है मेरे को लगता है ऐसा। हार भी सकता हूँ मैं। भाई क्या आ गया है ना मैंने। कहेंगे तुझसे प्यार करूँगी नहीं। भाई बच गया भाई। शिट 94 कटे। वर्स्ट गन स्नाइपर मेरे को बिल्कुल नहीं आती चलानी। लाइक इसको पता नहीं था मैं कहाँ पे हूँ। When the days अगेन कवर में मर जाता हूँ। हर जगह से फुटस्टेप आ रही है। इट्स लाइक वो दूर रहता है तब फुटस्टेप आती है, जब पास आता है तब नहीं आती है। लाइक देयर इज सीरियस प्रॉब्लम इन माय हेडफोन। ओह माय गॉड। लेट्स वेट ओवर हियर। अरे ब्रो सॉरी ब्रो। मारा क्यों नहीं तूने।
कुछ पता नहीं चला भाई, वो कैसे उठ के आ गया। जीरो। भाई इसकी गोली क्यों नहीं लग रही है मेरे को? क्या हो गया? ख्वाबों में छुपाया तुमको। अग्गू। रश करने के मूड में हम आदमी। टायर्ड ऑफ एवरीथिंग। अगर ये मतलब टाई ब्रेकर सॉर्ट ऑफ हुआ ना तो मैं आ रहा हूँ। बिकॉज माई कैरेक्टर इज नॉट इन माई कंट्रोल। कैसे? देयर इज सम सीरियस इशू विथ माई इंटरनेट। फायर करना चाहिए था ब्रो आपको। आई मीन प्री फायर। स्टैंड ऑफ टू की तो कोई भी स्ट्रीम नहीं करता। लाइक नो वन। जितना मुझे पता है इंडिया में करता होगा, मेरे को पॉपुलर नहीं है कोई इतना। पॉपुलर तो मैं भी नहीं हूँ वैसे। पॉपुलर का हमें जो कोई नहीं देख रहा है। हाँ, अगर मैं नेक्स्ट मैच जीत गया so I will be like gold 2 or something. Eh, ah, ah, la 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 la. Come on यार। दो तो नहीं चल रहा। लेट्स जस्ट प्ले डिफ्यूज। हे भगवान, थोड़े कमजोर बंदे आ जाए इसमें। लीव द मैच। शुड डिस्कनेक्ट। सब बीच में मत फेंका करो यार। मैच चलते रहता है, मैं बीच में आ जाता हूँ। लेट मी जस्ट बी द टेररिस्ट। वेयर एम आई गोइंग?
एंड आई थिंक कि मैं टेररिस्ट हूँ। फक। इसका मतलब मुझे बॉम्ब प्लांट करना था, मैं क्या कर रहा था यार, shit यार। ब्रो डोंट डाई, जस्ट डोंट डाई। अरे आजा, उधर कहाँ जा रहा है तू अकेले? इधर चल इधर। मर गया भाई जाते ही। डैम इट, हमारे प्लेयर नहीं आए। लेट्स गो। ये इधर से आजा। अरे क्या चुत्ते उत्ते है क्या ये छोट? जब वहां से मर रहे हैं तो वहां नहीं जाना ना लोड़ू। फिर मरेगा वहां पर छोट। अरे 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 क्या भाई? नाइस, वेरी नाइस। देख बंदूक बाय नहीं हो रही। सो लेट्स गो फ्रॉम हियर टू द मार्क बी। मैं प्लांट कर रहा हूँ। भाई आओ ना यार साथ में। द फक आर यू गाइस डूइंग? पता मैं अब तो डिफ्यूज कर देगा भाई। अलग अलग खेलना था तो मेन चूतिए। अमीर का साहब तेरी माँ की चूत लौड़े। साथ में नहीं खेलना। Well, I guess एक ही बंदा बचा है अभी। That was really nice. Let's go. ये लोग हमसे जल्दी कैसे पहुंच जा रहे हैं? कुछ तो करना पड़ेगा, लाइक वो लोग यहाँ जाके बैठ रहे हैं ना तो अपन इस तरफ से जाते हैं। कर दे प्लांट।
से। अरे क्या भाई, we are actually losing the match 5-2. कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है भाई टीम में हमारे। दो बंदे लग जा रहे हैं, दो बंदे लग जा रहे हैं, कहाँ डूबे सब। इधर आओ ना। वो देखो भोसड़ी के कहाँ चले गए। इसके टीममेट भी आते हैं। हमारे टीममेट साथ में आओ। या तो मत खेलो यार, इस साइड को क्रैक कैसे करे समझ में नहीं आ रहा। देख के फिर मर गया ये। जो भी था ये। मैं जा तो रहा हूँ। शिट। We need to do kills. यार क्या मौली थी। लंड कुछ नहीं होने वाला। भोसड़ी के मर गए माँ कर रहे हैं। हट।
आई डोंट वांट टू प्ले दिस गेम। कैंसिल भी नहीं हो रहा तो लेट्स प्ले लिटिल डिफरेंट गेम। लिटिल ऑर्फियस खेलेंगे। वी वर ऑन एपिसोड 4 और आई डोंट रिमेम्बर कि क्या हुआ था। हाँ याद आया, मैं बार बार अटक जा रहा था इस लेवल में। ओके, डू वी गो डाउन और नीचे भी जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। देख, एग्जैक्टली। अरे करूँ क्या फिर? एक ये है घुमाने का। और इसे भी हम घुमा सकते हैं। इसको पुश करना है क्या? जंप। यार ये कैरेक्टर जंप नहीं कर रहा है। देख, जंप नहीं कर रहा है। डबल टैप करना होता है, मैं भूल गया। अब यहाँ से कहाँ जाना है? आई डोंट नो। गिर के तो मर जाते हैं। इस डब्बे का भी कुछ नहीं करना है। इसको भी नहीं ला सकते। तो व्हाट डू वी डू यार? और अब यहाँ मैं आके फंस गया हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। देयर इज नो बटन, देयर इज नथिंग।
और गिरते ही हम मर जा रहे हैं। What the fuck यार, मेरे को नीचे लाना है। तो लीवर होगा ऊपर आई गेस। पर यार ऊपर क्यों होगा लीवर? और इसको पुश भी नहीं कर सकते। कुछ नहीं है ना, ऊपर है कुछ। यहाँ पर राइट साइड में क्या है? तो यहाँ जाना था यार, मैं कहाँ क्या कर रहा हूँ? On we flew across the deserted, frozen plateau. I was single-handed in my pursuit, dogged in my determination. We are now. No. I would take back little Orpheus and prevent Toll from detonating the bomb. Ah, you are as humble as We ever, Tavarish. failed. On we flew across the deserted, frozen plateau. I was single-handed in my pursuit, dogged in my determination. I would take back little Orpheus and prevent Toll from detonating the bomb. Ah, you are as humble as ever, Tavarish. Well, General, you are a great military leader, a great strategist, whereas I am simply the humble son of a watch toy maker, and driven by patriotic fever with no regard for my own safety. I rushed blindly on. Sorry. Well, General, you are a great military leader, a great strategist, whereas I am simply the humble son of a watch toy maker, and driven by patriotic fever with no regard for my own safety. I rushed blindly on. अरे क्यों नहीं यार? Well, General, you are a great military leader, a great strategist, whereas I am simply the humble son of a watch toy. Well, General, you are a great military leader, a great strategist, whereas I am simply the humble son of a watch toy maker, and driven by patriotic fever with no regard for my own safety. I rushed blindly on. Well, General, you are a great military leader, a great strategist, whereas I am simply the humble son of a watch toy. Well, General, you are a great military leader, a great strategist, whereas I am simply the humble son of a watch toy maker, and driven by patriotic fever with no regard for my own safety. I rushed blindly on.
स्ट्रेट में क्या कर रहा हूँ यार, पहले दबा दे रहा हूँ। Well, General, you are a great military leader, a great strategist, whereas I am simply the humble son of a watchdog. Toy? प्रॉब्लम इन दिस। Well, General, you are a great military leader, a great strategist, whereas I am simply the humble son of a watchdog. Toy maker and driven by patriotic fever with no regard for my own safety, I rushed blindly on. So we have a helmet now, जिसकी वजह से बच गया। Will our courageous yet unfortunate hero drown in the depths of an inhospitable frozen sea? Will he thaw out in time to prevent Toll from detonating the bomb? Will the general holiday in Omsk next year? Or Tomsk? Or perhaps both? What exactly is the difference between a mammoth and a hairy elephant? All of these questions and more should almost certainly be answered in the next exciting episode of Little Orpheus! Okay, let's play episode 5. I thought I was doomed. But a miraculous thing happened, General. I could breathe. It must have been the helmet that was jammed onto my head. It was a strange and remarkable thing. Some might almost say beyond belief. A narrow-minded fool may indeed, General, but of course you are no Durak. But even as I sank towards the floor of that lost ocean, my journey was about to take me to darker, stranger territory than ever before. And it happened like this. So we can jump higher in water and we cannot run fast. Let me see if I have this correctly. After narrowly failing to apprehend the mad missing explorer Toll and recapture my atomic bomb in your giant snowball, you fell through thin ice and sank to the bottom of a subterranean ocean, discovering along the way that the mind control helmet you had accidentally wedged onto your head enabled you to breathe underwater and resume your pursuit across the seabed. Let me see if I have this correctly. After narrowly failing to apprehend the mad missing explorer Toll and recapture my atomic bomb in your giant snowball, you fell through thin ice and sank to the bottom of a subterranean ocean, discovering along the way that the mind control helmet you had accidentally wedged onto your head enabled you to breathe underwater and resume your pursuit across the seabed. Why am I not?
General, you seem perplexed. Perplexed? Perplexed is that the keys to my house are not where I left them. Perplexed is the fact my dog will not eat cheese like other dogs. No, Ivan Ivanovich, I am not perplexed. Oh, what the fuck? I died. यहाँ से कहाँ जाना है पर maybe down. Intrigued, then, perhaps? I'm not sure intrigued is the correct term either. Enraged at being taken for a simpleton. Now that, perhaps, is a better way of describing my current state of mind. Like अगर real life में भी possible है तो That is unfortunate, General. Once again, Comrade Pervalov, I must correct you. Unfortunate is losing one's car in a snowstorm. Unfortunate is booking opera tickets on your wife's birthday and getting the date wrong. Oh, was she furious? That is not the issue! Furious. However, now that is a good word. I could speak with your wife. Would that help? I could always have a word with her if you like. I could always have you shot. Oh, you could. But I suspect she would appreciate the gesture less. I guess these are kind of eggs. अरे क्या है बबल to think that there is another world beside Earth and इसके अलावा एक समुद्र भी है और उस वर्ल्ड में एक आसमान भी है जो हमारे आसमान से अलग है दैट्स सो वियर्ड A kraken. A vast monster of the sea. A giant, humongous, many-armed electrical destroyer of ships and cities. Electrical? Electricity flowed along its horrible body, sparking and stunning all it touched, flowing like deadly rivers along its awful tentacles. so how will you get out of this that's a really interesting question he's now jumping higher A sobering discovery. Are you suggesting that the vessel simply wandered off course and sank here? That seems unlikely even by your standards. No, General, I only wish that were true. The mighty ship showed terrible scars, signs of having been grappled and torn asunder by some huge and terrible adversary. That is indeed strange and curious. I am troubled by this discovery. Might you almost be perplexed, perhaps? Don't push your luck. like ये शिप है जिसमें न्यूक्लियर और वो समुद्र के अंदर डूबा और मे भी जो कांटे ये सारे न्यूक्लियर रेडी सॉर्ट ऑफ क्या क्या लीवर पुल करना है
ओ, तो इन पे लाइट पड़ते ही ये फीके पड़ जाते। डेप्थ एंड अरे ओए क्या कोई तो यहाँ पे काम करके गया है, कितनी सारी लाइटें तो लाइट साइंटिस्ट ने बुझाई। आई गेस क्या वही होगा। I was stationed at Sydney Ostrov some years ago. I am only too aware of how easy it is for the imagination to create monsters when one is exposed to lonely and dark places. My men required constant monitoring. Much like my cousin Pavel. He was also stationed at Ostrov? No, he required constant monitoring. He was a devil for stealing eggs. खजाना। This is the most difficult part of the bubble. I was referring to the fear that something is lurking in the darkness. Something strange, brutish, and ill-intentioned. Again, that sounds much like my cousin Pavel. I was referring to the fear that something is lurking in the darkness. Something strange, brutish, and ill-intentioned. Again, that sounds much like my cousin Pavel. अरे तो उड़ क्यों रहा है ये? आई गेस हमें यहाँ से बबल में बन बैठना है। Another way, जो अपनी
करेंगे तुझसे प्यार। ये गेम मतलब दिखता 3D है पर है 2D। I was being hunted. There was no doubt about it. And escape was all I could think about. Naturally. That and duty. Duty? Yes, General. After all, I had a bomb to recover from that villain Toll. How clever of you to remember that. अरे यार damn it. But first, there was the issue of escape. Escape from a dreadful, grasping creature that consumed all it could reach, dragging anything that wanted. But first, there was the issue of escape. Escape from a dreadful, grasping creature that consumed all it could reach, dragging anything that wandered within its clutches to a miserable doom. A hoarder of useless trophies and stolen goods. Once again, Tavarish, I suspect you are pursuing a somewhat tortuous metaphor for capitalism, in the misguided hope of appealing to my political ideals. Like पानी में डिफेंस के लिए बेसिकली really और एट द सेम टाइम इसको शार्प भी होना मतलब स्ट्रांग होना पड़ेगा। I was like a mouse, General. A little mouse being toyed with by a terrible cat. Rather a wet mouse. I was like a little underwater mouse. Being stalked by a giant rubbery electrical cat with 8 tentacles. Exactly, General. Good, I'm glad we cleared that up. You may continue.
submarines. You didn't mention submarines before. Didn't I? Why? No, Navernia, General, of course. Submarines. Millions of them. Several, at least. Any particular submarines? Did you see names, numbers? General, have you lost a submarine? I am not at liberty to answer that question, as you well know. Well, General, losing one's car in a snowstorm is unfortunate, as you say. But to lose a whole submarine, that could be considered careless. And you are certain it was M256? Well, that was painted on the hull, so I can only assume so. I think I know where this dismal story is going next. You somehow miraculously brought the remaining closed cycle engine online, flooded the torpedo tubes, dispatched the Kraken with one shot, and triumphantly surfaced. No, General, that is not what happened at all. I did indeed make my way to the torpedo tubes, but for a very different purpose. After all, history has taught us that atomic power is not to be toyed with. Much like tired, impatient generals, perhaps. Particularly the perplexed ones. Indeed, General. Or like dogs that will eat no cheese. Oh, yeah, more glitches. Maybe this submarine is still working. तभी तो नहीं हो मतलब electricity. आती है Will our determined yet disorientated hero end his days as socialist sushi? Will his daring exploits be cut tragically short by vengeful calamari? Will the general's wife ever forgive him for missing Ruslan and Lyudmila? And just how many eggs did Pavel steal, and where did he keep them? All of these questions and more may or may not be answered in the next exciting episode of Little Orpheus! Let's play the next episode, in which I think he's back. The Lost Records mode is now available. Revisit your adventures and discover it. I was alive, General. Somehow, miraculously, I was alive. Some twist of fate, some hand of destiny, but I was alive. Strange as this new world was, I knew Toll must have come this way, and it was my task to find him. And it happened like this.
The sun beat down on me relentlessly. The heat was unbearable. I was exhausted. Yet I could not stop. I had to go on. For 7 weeks I trudged across the desert. On the second day... Please, comrade, if we may. I think we can skip the details, unless you consider them to be particularly relevant to the location of Little Orpheus. Of course, General. We will simply omit the tale of the singing chasm, the oasis of mirrors, the sightings of Tol's Mieng aloft on their pterodactyls carrying parts of my crashed rocket drill over the horizon to Lemuria. Wait, the what? Singing chasm? Not that, but the rocket drill. Oh yes, General, the rocket drill. But what did Tol want with it? And why Lemuria? Lemuria? Lemuria, General. I am not familiar with this Lemuria, comrade. Well, that is because it does not exist, General. Or at least, so I thought. There is a city. It's like the city is welcoming us. फिर भी नहीं जाता. Strange crystals seem to exert an extraordinary hold over the stone blocks and arches. When they hummed, the whole city remade itself. Where they were missing, clearly looted by some villainous thief, the city was fallen to ruin. It was like a vast musical instrument, vandalized and yet still attempting to toot. How poetic. I am sure our engineers would be fascinated and baffled in equal measure. If the whole department hadn't been arrested for sedition last week, I would happily convey it to their skeptical ears. Sedition, General? Really? How poetic. I am sure our engineers would be fascinated and baffled in equal measure. If the whole department hadn't been arrested for sedition last week, I would happily convey it to their skeptical ears. Sedition, General? Really? It is unfortunate news indeed. I am joking, comrade.
पागल साइंटिस्ट यहाँ तक पहुंचा है because these creatures. How do I even do that? कोई ऑप्शन नहीं है भाई. There is a uh, Oh yes, the Mank were here all right. Which meant whatever dastardly scheme Toll had, it was to be enacted on these burning sands. And you will explain this in due course, I imagine. What you need to know first is this. I have told you already how parts of the devices the enslaved Mienk were forced to wear came from the surface. Radio parts and so on, yes, from what you have told me. Assuming there were plenty of lost ships in the ocean as you claim, for Toll to have dredged up what he needed to assemble them. Aha, good. You are one step ahead of me, General. I said assuming. Of course, assuming. Now, as I gazed in awe at the buildings rising and falling around me, I realized that the other major component of those mind-controlling helmets was crystal. Toll had raided Lemuria for them. He knew the city. He knew the crystals could amplify vibrations and waves, and was using them to boost the signal of the radio parts to exert his control over the Memph. Which meant... Yes? Imagine, General, doesn't this what sound such like amplification could achieve when fused to the finest atomic science our great Soviet civilization has produced. Wait! I do not understand. You said Toll was planning on using the bomb to shatter the Earth's crust to return to the surface. A tragic mistake, General. They had not recognized the extent of his mad ambitions. You mean to imply Toll would have attempted to enslave the Russian people? Bah! The will of the Soviet citizen is mighty and strong. To you, perhaps, as a trained warrior, but consider perhaps instead a humble son of a toy maker from Tomsk. Ah, yes. Perhaps we have our share of sympathies, after all. where do I
बिना खाए पिए इस आदमी ने ये सब कर लिया. It is really interesting. The vast pictograms told of a history of wonders. They seem to suggest the Lemurians were travelers from another world, where a mysterious clock seemed to stand. That is very mysterious. As mysterious as the location. मतलब भाई damn it, traffic.